So hi guys, so today's our topic is hair shape. Already I told you about in my previous video about hair root. So today's our topic is hair shape. So we'll discuss about hair shape. What is hair shape? So what is hair shape? Hair shape part of our hair which is above the skin or which we can see from our eyes. So this is a structure of hair and this is a hair shaft. So this is our hair shaft. This is our hair shaft. So we will discuss about this hair shaft, okay, how it is composed of, what is the structure of this, and how many layers it have. Hair shaft, a part of hair which is extended above the skin. So this is hair shaft. This is our hair. It is made up of like 3 layers. You can see it has 3 layers like cuticle, cortex, and medulla. And cuticle is the outermost layer, cortex is the middle layer, and medulla is innermost layer. Like this way, we will study deeply about these all layer and much more about the structure of hair shaft. So as I told you, our first layer is cuticle layer. So this is our cuticle layer, outermost layer. This is our cuticle layer, outermost layer of hair shaft. So the 3 major parts of hair are cuticle, cortex, and medulla. So first is our cuticle. So what is cuticle? Cuticle is the outermost layer of hair shaft. It is translucent layer. Translucent means it's like a transparent layer. ठीक है, क्यूटिकल लेयर होती है और एक्चुअली इसका मेन क्या होता है, जब हम सैलून में वर्क करते हैं तो व्हेन वी डू शैम्पू, हमारी जो क्यूटिकल लेयर है, क्यूटिकल लेयर से क्या होता है, जो सारा डस्ट है, सारा ऑयलीनेस है, वो सारा निकल जाता है व्हेन वी डू शैम्पू. एंड व्हेन वी डू कंडीशनिंग, जब कंडीशनर अप्लाई करते हैं या मास्क अप्लाई करते हैं, तो अगेन आवर क्यूटिकल लेयर गेट क्लोज. So that's why it is very important after doing shampoo, we have to use conditioner according to our hair type. Conditioner, we don't have to use conditioner on hair scalp. Only we have to use on tips or tips of hair or only in length. Or when we do back combing or when we do harsh chemical, when we use harsh chemical, our cuticle gets swells, cuticle get open. So hair conditioning smooth down the cuticle, make it lie like a clip. So cuticle layer, when we do comb, when we do shampoo, cuticle layer get open, and when we do conditioner, cuticle layer get close. So it is very important to get close the cuticle layer. अगर हम cuticle layer को close नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे बालों में जो डस्ट है, पॉल्यूशन है, वो पेनिट्रेट हो जाएगा, वो स्टिक हो जाएगा. सो इसके बाद हमें cuticle layer को क्लोज करना भी इंपॉर्टेंट रहता है शैम्पू के बाद. सी अगर क्यूटिकल लेयर अगर हेल्दी रहेगा तो ये यू कैन सी दिस फर्स्ट डायग्राम. क्यूटिकल लेयर, उसके जो एज आई टोल्ड यू दैट क्यूटिकल लेयर इज मेड अप ऑफ 6 to 10 ओवरलैप पिली सेल्स. 6 to 10 ओवरलैप सेल्स रहते हैं, जिसके भी सब लेयर्स होते हैं, जिसको हम एंड्रोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल एंड एक्यूटिकल्स कहते हैं. क्यूटिकल लेयर के भी सब लेयर्स होते हैं. तो क्यूटिकल लेयर टाइटली पैक्ड होंगे तो यू कैन सी दिस लो पोर. तो ये डायग्राम से यू कैन अंडरस्टैंड वेरी नाइसली. अगर क्यूटिकल, सो विच वन इज क्यूटिकल लेयर अगर टाइटली है तो मीन्स रेसिस्टेंट है, बाल हेयर हेल्दी है. सो क्यूटिकल लेयर डैमेज है तो यू कैन सी लाइक दिस. और क्यूटिकल लेयर हमारी कैसी होती है, लाइक फिश सरफेस. आपने मछली की सरफेस देखी होगी ना. अगर क्यूटिकल लेयर अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमारा क्यूटिकल लेयर कैसे दिखेगा, फिश की सरफेस की तरफ. ठीक है, 6 to 10 ओवरलैप सेल से टेम्परेरी वर्क करते हैं, वो जाके कहाँ पर वर्क होता है, वो क्यूटिकल लेयर में वर्क करता है. जैसे टेम्परेरी वर्क, टेम्परेरी केमिकल वर्क मीन्स लाइक शैम्पू, कंडीशनर, हेयर स्पा, एंड लाइक हीना कलर ऑल्सो वर्क एज अ टेम्परेरी कलर ओनली बिकॉज इट कोट इन क्यूटिकल लेयर ओनली. सो दिस परमानेंट टेम्परेरी कलर ऑल्सो वर्क इन क्यूटिकल लेयर ओनली. So cuticle layer is like a door of our hair. Cortex is the heart of hair. It is a very important layer of our hair shaft because in pigments about 90% of hair weight comes from the cortex. प्रोटीन स्ट्रक्चर, परमानेंट केमिकल जॉब करते हैं, लाइक परमानेंट हेयर कलर, परमानेंट स्ट्रेटनिंग और परमानेंट पम्पिंग करते हैं. तो ये सारे केमिकल जॉब परमानेंट कहाँ पर वर्क करेंगे, हमारे कॉर्टेक्स लेयर. इवन जो हमारे हेयर बॉन्ड्स होते हैं और जो हमारे कलर, नेचुरल कलर पिगमेंट्स होते हैं जो हमारे हेयर में प्रेजेंट रहते हैं, यूमेलिन, फ्यूमेलिन, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर कॉर्टेक्स लेयर ओनली. So our bonds are also present in our cortex layers. Like we have hydrogen bond, salt bond, disulfide bond. Hydrogen bond make up about 35% of hair straight. Hydrogen bonds are weak bond which easily broke by heat, wet, or by physical changes in our hair. So hydrogen bond are more in number and easily break by wet and heat. And second we have salt bond. Salt bond also broken by water to create physical temperature change in our hair. और pH scale हमारा डिस्टर्ब होता है हमारा हेयर का, उस in that case also our this salt bond gets break, as we know that our hair pH is 4 5.5. Then we have disulfide bond. Disulfide bond are very strong bond. These are break with strong chemical like rebonding cream. We have thioglycolide acid. So disulfide bonds break through
strong chemical only. Here color pigments are also present. We call it melanin pigments. So melanin pigment which give natural colors to our hair. So melanin pigment, we have two types of melanin pigment, that is eumelanin and pheumelanin. Eumelanin are dark color pigments. Dark color pigments provide brown and black color to our hair, and pheumelanin pigments are light color pigments, provide light color to our hair, like yellow and blonde tones, red. So we have two color pigments. So these are also present in cortex layer. So that's why we are calling that it is a very important layer of hair shaft. 90% of our hair made. So black brown pigment are called eumelanin, and red yellow pigments are called pheumelanin. Then last layer we have some innermost layer on. We have medulla. Medulla is the innermost layer. Also a big backbone of hair है medulla. But in some those who are having very thick hair, it contain more in thick hair, and those who have very fine hair, sometimes it is absent. Medulla is absent in fine hair sometimes. Hair is made up of fiber. So fiber structure of our hair is made up of like cuticle. Outermost layer we have a cuticle fibers. In cuticles also we have fibers. So our outermost layer is cuticle layer. Then in cuticle layer, as I told you, we have a lot 6 to 10 overlap cells like enderocuticle, exocuticle, acuticle. Then we have cortex layer. And then cortex layer, under cortex layer we have cortical cells. Then group of cortical cells. Then we have macrofiber. Then we have macrofiber. Then we have protofibers, and then we have this keratin change. Then we have amino acids. So this is a sequence. In this way our fiber are joined with each other and make our hair shaft. So that's all about hair shaft. So if you like थिंक दैट अगर आपको लगा ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा आपको नॉलेजेबल लगा, हेल्पफुल लगा आपकी नॉलेज बढ़ाने में, सो प्लीज़ आप इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना जिसको नीड हो गया. थैंक यू.